Good morning, friends. Another important video pertaining to some of the important changes. White Finance Act 2022, now made effective from 1st of October 2022. Two-way supplier and recipient communication of GST return filing system now officially omitted. So whatever we have envisaged when GST got introduced, the GSTR 1 by supplier auto-populated in two-way for the recipient, then recipient going to file GSTR 2. For any add, modify, delete, it is going to be auto-populated in GSTR 1A for the supplier either to accept or reject, and then GSTR 3. This all concept got vanished. Two-way communication GST return filing system all vanished. So ITC matching, mismatching corresponding to this GST return filing system, automated GST return filing system is being done away with. Section 42, 43, 43A and forms like GSTR 2, GSTR 1A and GSTR 3 got omitted. No more applicable. So for the past period, whatever dispute was pertaining to this two-way communication, ITC matching and mismatching is now stands omitted from 1st October 2022. Now they are saying it would be one-way communication. For availing credit by the buyer and recipient, it is going to be dependent on supplier. So concept has come, know your supplier. Being buyer or recipient, you must know your supplier, and supplier must be tax compliant. If he is not tax compliant, then for sure credit which you want to avail may be disputed. So a lot of changes are being made in GST law, and over a period of time we will find this improvement which we wanted to see in terms of availing ITC credit in the hands of buyer and recipient will come. We have seen in the past that because of non-compliance by the supplier, credit was disputed and denied to the recipient and buyer for number of region. होता क्या था, आपने भी देखा होगा, सप्लायर 1 नहीं भरता था, आपके 2A में नहीं आता था और आप क्रेडिट अवेल करते थे, तो डिस्प्यूट इस चीज़ का भी होता था कि मेरे 2A में नहीं आ रहा बट क्रेडिट मुझे मिलेगी, मैं चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की मेरे कुछ वीडियोज हैं, मैंने आपको बताया भी है कि माई क्रेडिट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन 2A बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भारतीय एयरटेल, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन 2B। पास्ट में हमने ये भी प्रॉब्लम देखी कि सप्लायर ने रॉन्ग फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स GST नंबर B2B को B2C बना दिया, इंटर स्टेट सप्लाई थी इंट्रा बता दिया, मेरे 2A में नहीं आता था और क्रेडिट डिस्प्यूट होती थी। नाउ क्रेडिट इज डिपेंडेंट ऑन GSTR 2B फ्रॉम 1st January 2022, नो डिनायल। सो बहुत सारी दिक्कतें थी और टू-वे कम्युनिकेशन जो सप्लायर और रिसिपिएंट कनेक्टिविटी थी और जो रिलेवेंट प्रोविजन थे ITC मैचिंग एंड मिसमैचिंग ऑल गेट्स ओमिटेड। अब सारा कंफ्यूजन ने साफ कर दिया, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट विल टेक सम टाइम। To my considered view, 6 months to 12 months. That is what to my mind. And what all changes, important changes are being made on this direction, where buyer want to avail credit, recipient want to avail credit. So first of all, you should know your supplier, and your supplier must be tax compliant. And within the GST law also certain provisions are being made that credit when you are availing, it is dependent on your supplier. Your supplier is faulted with 6 restriction under section 38. For fault of your supplier, your credit would be denied even though auto populated in your GSTR 2B.
So we have to be very, very careful now. But what all provision are now going to help us for improving the compliances? And by improvement in compliances, my credit going to be, buyer's credit going to be little easy. But know your supplier. So listen those provision. Rule 59 sub rule 6 of CGST rule. It was amended in the past, and from 1st January 2022, there is specific provision that unless you file your 3B for the preceding period, you will not be able to file GSTR 1 for the relevant tax period. So if I am in the month of October and I want to file my GSTR 1, I need to ensure that I am filing my GSTR 3B for the September month. अगर मैंने सितंबर का 3B नहीं भरा तो मैं अक्टूबर का GSTR 1 नहीं भर सकता. अच्छा है, कई बार ऐसा होता है ना कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया और GSTR 1 भरे जा रहा है. क्रेडिट तो 2A में आ गई, 2B में आ गई, पर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ. तो यहां से इनने इसको इंश्योर किया कि अगर आपको अक्टूबर का 1 भरना है GSTR 1, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका 3B सितंबर का भरा हुआ होना चाहिए. Explanation under section 75 subsection 12 from 1st January 2022. और इसमें उन्होंने क्या कहा, if there is a difference in your outward supply and corresponding output tax liability as shown in GSTR 1 versus GSTR 3B, that would be self-assessment tax, and that can be recovered even without issuance of so-called notice under section 73 and 74. यानी अगर आपने 10 लाख रुपए की लायबिलिटी दिखाई आउटपुट टैक्स और 3B में आप 8 लाख 6 लाख 5 लाख पे कर रहे हैं, तो डिफरेंस है ना. इसको इन्हें कह दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स, and that can be recovered even without issuance of so-called notice under section 73 non-fraud, under section 74 fraud cases. यानी आप तैयार हो जाइए. आप प्रोविजन है जहां पे हम लीगली, कई बार टू एरर इज ह्यूमन, क्लरिकल मिस्टेक हो गई आपकी, आप अमेंड कर सकते हैं 37 में 1, and that too till 30th November. Watch my other video. Until then recovery should not be initiated. But अगर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप अगर 1 गलती से भर दिया तो समझ में आता है, लेकिन आप 1 भरते ही इसी इंटेंशन से हैं कि मैं 2A में क्रेडिट पास ऑन कर दूं पर टैक्स पे ना करूं, तो अब आपको कॉम्प्लायंसेस करने हैं. आई होप यू आर गेटिंग माय मैसेज. अब 2 चेंजेज फाइनेंस एक्ट 2022 में किए गए, वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, and this is now made effective from 1st of October 2022. Listen very carefully. Under section 37, and it is saying unless you file your GSTR 1 of your preceding period, if any of the GSTR 1 is pending for the preceding period, you will not be allowed to file GSTR 1 for your current tax period. यानी अगर पुराना प्रीसीडिंग पीरियड टिल सितंबर, जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अक्टूबर में हूँ, अगर सितंबर तक का आपने GSTR 1 नहीं भरा तो आप अक्टूबर का GSTR 1 नहीं भर सकते. तो कई बार चैलेंज होता था ना कि सप्लायर ने 1 नहीं भरा, टैक्स तो पे कर दिया है, तो 2A में नहीं आता था, 2B में नहीं आता था. अब ये कंपलसरी है कि सप्लायर को अपना प्रीसीडिंग पीरियड का पूरा GSTR 1 भरना पड़ेगा, एंड मैच भी करना है GSTR 1 और 3B. आप समझ गए होंगे मेरी बात. कॉम्प्लायंसेस 1 वे ट्रैफिक है, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट, इम्प्रोवाइजेशन, टैक्स कॉम्प्लायंसेस.
39 में क्या चेंज किया इनने? 39 में 3B भरते हैं हम, GST या 3B। उनने कहा कि अगर आपने अपने करंट टैक्स पीरियड का अक्टूबर मंथ का अगर GSTR1 नहीं भरा तो आप 3B नहीं भर सकते करंट टैक्स पीरियड का। Once you file your GSTR1 for your current tax period, then only your GSTR3B get enabled. Otherwise, you will not be able to file your GSTR3B. Good. 1 भरेंगे तो आपकी लायबिलिटी डिस्क्लोज हो गई, टैक्स का पेमेंट करना है 3B के जरिए, और उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। Now, lot of improvement will come in the system when supplier going to be compliant, tax compliant, and thereby easing credit in the hands of buyer or recipient. But it will take some time, and that is what the submission to all of you, improvement which will come over a period of time. So these are the important changes. We have done away two-way communication of GST written filing system. Corresponding rules are being stands omitted. Relevant forms pertaining to this two-way communication also got omitted. Now these compliances need to be done. So one of the conditions that credit must be matched with GSTR 2B, right? Effective from 1st January 2022. I have discussed in number of videos and in webinar and seminar. There are certain issues that credit coming in 2B but still not available, or credit not coming in 2B but still credit is available. So get set prepared. You can watch those videos, but this video was mainly on two-way communication gone, one-way traffic, know your supplier. Credit is dependent on supplier who is tax compliant. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.